सर मेरा एक क्वेश्चन था। इस जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में भी आवाम पर बहुत जुल्म हो रहा है। और जैसा कि रिसेंटली आपने सुना होगा कर्नाटक में जो हिजाब का जो मैटर है वो भी बहुत राइज हुआ है और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा है। तो सर हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में हम किस वजह से इस पर आवाज उठा सकते हैं जिससे कि हम मुस्लिम आवाम को डिफेंड कर सकें। ये बताएं, आर यू फ्रॉम कर्नाटका? नो सर, आई एम फ्रॉम इंडिया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ओके। आप कर्नाटका के किसी बंदे को जानते हैं जो कि फर्स्ट हैंड नॉलेज रखता हो इसकी? यस सर, यस सर, एक्चुअली आई एम एन एडवोकेट एंड मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को कर्नाटक में। Okay, so give me the intensity, the real intensity of the issue at hand. Okay, not something that you heard, something that you actually know. Not something on your TV. I don't know what kind of TV channels you have, but ज्यादातर टीवी चैनल जो है ना वो एक पेंटेड व्यू देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इशू नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर कि इशू जितना दिखाया जा रहा है उससे भी ज्यादा है। आई नो व्हाट इंडियन मुस्लिम्स आर गोइंग थ्रू, डोंट वरी, आई लीव नो डाउट। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोस पैसिफिस्ट मुस्लिम्स हु एक्चुअली स्टार्ट्स टू से कि oh you know what, turn the other cheek. I'm not that guy, and that something has backfired in many occasions. I know where we have to show the the tolerance and where we can't. Okay, but the question is, what are the facts? See, I have actually come to terms with the fact कि जब भी कोई चीज टीवी पे सुनूं ना तो uh, उसको डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले कोई स्ट्रेटजी बनाऊं। अदरवाइज मैं तो देयर इज नो वे। ये दिस इज द बिगेस्ट form of deception now. Media has lost its credibility for the last 50 odd years. जिस वजह से ये लोग आए थे मीडिया यस में, सर। तो वो मसला ये हुआ है कि मीडिया में अब जितने भी लोग आते हैं ना, वो जिस तरह पुलिस में जाते हैं ना इंडिया में, या जिस तरह पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं, तो वही वाले लो मोरालिटी के लोग मीडिया में भी जाते हैं ना। मीडिया में कोई मोमिनीन तो नहीं जाते। तो यस सर। मीडिया की जो पावर है वो ऐसे करप्ट लोगों को मिली हुई है। जो पार्लियामेंट हाउस में इतने करप्ट लोग नहीं है, ट्रस्ट मी, उनके ऊपर बहुत चेक्स होते हैं। मीडिया पे तो कोई चेक ही नहीं है। यस हवा सर। जो भी बोल देंगे बस, इनको कोई कोई क्वालिटी इंडेक्स है ही नहीं ना। देयर इज नो वे टू यस सर। फाइंड सेइंग एनीथिंग। और वैसे भी मीडिया इंडस्ट्री की जो जर्नलिज्म है ना, जर्नलिज्म, ये यस सर। साइकोलॉजिकली सबसे वीक ऑक्यूपेशन टू हैव है जर्नलिज्म। तो ये किसको साइकोलॉजी का पता है ना, उसको पता होना चाहिए कि ये आप हर एक की खबर रखने वाले अगर बंदे हो ना, तो आप खुद सोचें ना, आपके सर्कल में एक बंदा है जो हर एक की खबर रख रख के लिखता रहता है, आप उसके बारे में क्या, आपकी नेचुरल केमिस्ट्री क्या रिएक्शन देती है उसके? दैट्स लाइकली द बॉटम ऑफ द बैरल राइट देयर, राइट? यस दैट्स सर। यस सर। एंड इन बेचारों का इंटेलेक्ट नहीं होता शुरू में, दे एक्चुअली मेक अ करियर चॉइस आउट ऑफ दिस जस्ट यस बिकॉज। सर। बस वही है, डेफिनेशंस कम फ्रॉम द पॉपुलेशन नाउ। सो मीडिया वाले तो इतने करप्ट होते हैं साइकोलॉजिकली, इतने करप्ट होते हैं कि वो बेचारा, अगर कोई नेक बंदा भी चला गया ना तो उसको खुद भी नहीं पता वो साइकोलॉजिकली इतना मतलब इसको डिप्रेशन बोलते हैं। वो डिप्रेशन जो यस सर। डिप्रेशन है, द साइकोलॉजिकल डिप्रेशन मीन्स कि he thinks from the lowest pedestal of intellect. Okay, this is not a small matter. Understand what I'm trying to say, the intensity of my words. When journalists are trying to say something, make sure you understand it's a very deep reactive psychology that they're giving. they बेचारे मफलूज हैं, हैंडीकैप्ड हैं, माजूर हैं लोग। हम्म। So, फिर वो बात ठीक भी करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, still you really need to know how to um, attest that piece of information. Now when I hear when can you hear me? Can you hear me? Hello, Arish? Yeah, this is one of those issues that Twitter is going to have. हेलो। Can anyone see if they tell me if they can hear me, please? यस Listen, सर। यस सर। speakers. यस सर, आई कैन हियर Okay. अच्छा, तो पार्लियामेंट हाउस में ना जो मोदी टाइप के लोग हैं ना जितने भी बैठे यू। हुए यस सर। यस सर। हैं, ये इनको 40 करोड़ मुस्लिम वोट चाहिए, याद रखिएगा। दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। ये इलेक्शन टू इलेक्शन मूव करते होते हैं। ओके, यस सर। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। पाकिस्तान में बैठ के ना किसी हिंदू कम्युनिटी जो कि 1% भी नहीं है हमारी, मैं फिगरेटिवली बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स 1% से ज्यादा है, यस सर। मगर उसको भी आप डायरेक्ट डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स, राइट? यस सर। यस। सो
कर्नाटका पे अगर मूवमेंट शुरू हुई है तो वो हिंदू वोट लेने के लिए हुई है, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। ओके, यस वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि हुई है और बस खबर आई हुई यस सर है। अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इंडिया इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इंडिया के अंदर क्लस्टर्स इतने बड़े और थिक हैं कि वो बगैर इलेक्शन के और बगैर किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के भी सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल रिलीजियस हिंदू मोटिव के पीछे भी बंदे मारने की कोशिश कर सकते यस हैं। सर ओके, अब हिंदुइज्म और इस्लाम में फर्क किया है कि इस्लाम इस एक ग्लोबल स्कोप, जो भी मुसलमान चाहे कर्नाटका के अंदर भी बैठा हुआ है वो पैदा होता है, वो हमेशा अपने आप को ग्लोबल स्पेस में प्लेस करता है। यस सर ही नोज मक्का मदीना से आ रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसको पता है कि बिगर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से स्टोरी स्टार्ट की है और पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचाना है, हर बंदा अल्लाह के मखलूक है, स्टफ लाइक दैट। यस सर नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम। हिंदू जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन है ना, वो अपने आप को ग्लोबली प्लेस नहीं करती। देयर इज नो मैप। ओके, यस सर वो इंडिविजुअली प्लेस करती है, इट इंटरनलाइजेस एन इंडिविजुअल थॉट। अब उससे होता ही है कि वो वाला बंदा कुछ भी कर सकता है अपने सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, जो उसके सेल्फ को सेटिस्फाई करते हो। ओके, यस और वो रिलीजियस वोट लेगा, अपने आप को जस्टिफिकेशन देगा रिलीजियसली। यस सर ओके, मुसलमान ऐसे कर नहीं सकता, उसकी साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन ऐसी बन नहीं सकती। हम्म ओके, ऑल ऑफ अ सडन he will isolate himself from the community. Now I'm not saying कि selfish लोग मुसलमानों में नहीं और बंदे नहीं मारते और बच्चे molest नहीं करते, और हम saying कि वो हम्म इस्लाम के नाम पे नहीं कर सकते। ओके, यस यस इस्लाम के नाम पे कल को बंदा क्यों ना हो, वो ग्लोबल ग्लोबल ऑब्जेक्टिव पूरे करने की कोशिश कर रहा है, वो लोकल यस ऑब्जेक्टिव में अपने आप को प्लेस नहीं कर हम्म रहा। सो आई नीड यू टू अंडरस्टैंड, व्हेन आई सी कि इंडिया में ये मसला है, देन आई एक्चुअली गो थ्रू ए गड़बड़ है ना गाड़ी में। आप अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें अगर आपने इसके अंदर। हाउ कैन आई म्यूट पीपल? आई नीड टू लर्न हाउ टू म्यूट पीपल। ओके, सो Arish, I need you to give me some data so that we can tell you how to strategize yourself here. Okay, यस सर need to understand. India is a very exposed community. ये चाइना की तरह नहीं है। India is very very exposed community. पूरी दुनिया को आराम से दिखाया जा सकता है कि क्या हो रहा यस है। सर Okay, सर बट एक्चुअली प्रॉब्लम यही है क्योंकि सर अभी रिसेंटली जैसे आपको पता नहीं होगा लेकिन रिसेंटली 2 दिन में हमारे 3 मुस्लिम शहीद कर दिए गए हैं। तो जो शहीद किए गए हैं सर मीडिया तो एक्चुअली इंडिया में अंडर गवर्नमेंट काम करता है तो मीडिया इस चीज को नहीं दिखाता है। लेकिन जो मुस्लिम जो एक एक यहाँ पर एक पार्टी बनी है MIM असदुद्दीन ओवैसी जिसका आपने नाम सुना होगा। सर एक्चुअली वो लोग भी इन चीजों को कवर नहीं करते हैं और सर आजकल ये एक आम बात बन गई है कि बस रोज कुछ ना कुछ खबर आती है कि यहाँ पर किसी की मॉब लिंचिंग हुई, ये शहीद हो गया, ये शहीद हो गया। एक्चुअली तो सर अब हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं क्योंकि अगर हम वॉइस रेज करते हैं तो हमारे ऊपर सर UAPA एंड दिस टाइप की धाराएं लगाकर सर हमको अरेस्ट कर लिया जाता है। सी काम तो लीगली करने की कोशिश कर रहे हैं। अरेस्ट का मतलब है कि देयर सम लॉ दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्चुअली अपहोल्ड हियर। अब टेक्निकली स्पीकिंग हिजाब बैन हो नहीं सकता ना इंडिया में। यू आर लॉयर, यू नो यस दैट। आई एम नॉट इवन इन इंडिया एंड आई नो दैट। सो it's a localized movement. There's no political value to it. However, there's a very religious sentiment that flows through Indian यस सर Hindus. Now, मसला पता क्या है कि इंडियन मुस्लिम जो है ना, वो रिलीजियस सेंटिमेंट को एडवोकेट नहीं करता। पता नहीं किस बात की आप लोगों को एक बचपन में ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपने अपने आप को एज अ मुस्लिम ग्लोबल एंटिटी प्रोड्यूस किया तो आप रेबल क्रिएट करार दे जाएंगे। You know what I'm saying? It's a problem with all minorities, by the way. सिर्फ इंडिया के मुस्लिम्स की बात नहीं है, ये अमेरिका के मुस्लिम्स की भी यही बात है। You have no idea कि टोरंटो में जुम्मे का खुतबा जब मैं सुनता था ना, तो ऐसे लगता था जैसे कि बच्चों के जो कॉमिक चैनल्स के ऊपर नहीं खुतबा चलना, वो जो प्रोग्राम चलते होते, बस बस मीठी मीठी छोटी छोटी बातें करते रहो ताकि ये ना हो कि कोई सुन ले तो हमें अपने स्केप्टिसिज्म में का शिकार करके हम पे कोई इल्जाम लगा दे। आई मीन दे आर सो अफ्रेड ऑफ देयर ओन डीमंस। बाकी के लोग, दुनिया सोच भी नहीं होती है, खुद ही अपने डीमन क्रिएट कर करके उन्हीं से डरे हुए होते हैं। दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी बाय द वे। ओके, that's not an abnormal disposition for a weaker entity in socio-economic terms. So you are a weaker entity. You're going to remain a weaker entity. It's something that you better admit. Okay, do not try and
Give yourself false identities here. Minority को minority declare करेंगे तो वो अपनी identity तो पूरी तरह practice करेगी ना, उसके बाद वो कुछ कर सकेगी. Now I'm not trying to tell you कि अमेरिका क्या इंडिया में आप rebel movement start करें, but at least give an impression that you know what, it can happen if you cross some lines. But you guys don't really go that way. Okay, you need to create a threat. बच्चा भी ना बच्चा माँ बाप को threat produce करके देता है through his body language कि there's something that can go wrong. Okay, now you need to understand how human psychology works in a communal level. ना बड़ी community आप 1 billion people, of course way more, 1 billion people के अंदर, even if you are about 30% of it, I'm assuming you're a little more than 30% of 1 billion. You guys have to understand जब तक आप मुसलमानों को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे तो हो कि उनके फायदे की बात है, and create a community just like the black people did in America. Okay, make sure you understand जो भी सियाह फार्म बंदा अमेरिका में अपने आप को गोरा साबित करने की कोशिश करता है, ब्लैक पीपल एक्चुअली आइसोलेट हिम. ही इज नॉट, उनकी साइकोलॉजी में डाल दिया उन्होंने बच्चों की कि यू कैन नॉट बी अंकल टॉम एंड बी accepted wholeheartedly in our own community. And even though I know they're suffering a lot, but they did the right thing there. Okay, they did the right thing. They actually created a way clearer identity. अब ज़ाहिर है उनके कोई global objectives नहीं है. You need to understand that ना, इस्लाम कितनी mobilizing movement है, ये तो समझ आनी चाहिए ना आपको ये वाली केस स्टडी देख के. यही अगर काले मुसलमान होते ना वहां पे अबशी तो सारे, तो आप देखते फिर दुनिया पूरी के अंदर क्या उन्होंने वक्त डाल के रखना था सबको, क्योंकि वो अमेरिका में, अमेरिका is on top of the food chain of wherever media exposure is, so you can get to see. Plus, America has branded itself as, you know, on top of the hierarchy of competence in so many ways. But, you know, they actually went into, you know, that Pauline philosophy, जिसकी वजह से they are never going to pick up any sort of, you know, threat. Now, जितना हबशियों के पास हथियार है, आम गोरा तो डरता है उनके पास जाने से. वैसे कोई हबशी गुजर जाए ना उनके गली में से भी तो पुलिस से कॉल कर देते हैं. वैसे ही चलते फिरते हबशी के खिलाफ, बेचारे के अपने बच्चे होते हैं, उसी नेबरहुड में भी रह रहा होता है. So imagine if they had that sort of a philosophy that, you know what, we cannot be contained. I'm sorry, we will never live on our knees. We will die on our feet. You know what I'm saying? ये basic गैरत का तकाजा है ना. So what you need to do is to understand कि Muslim movement इंडिया में कैसे होनी चाहिए. It's not कि आपने rebellion करनी है कि नहीं, but the threat has to be there. यार हम कोई तोता कुत्ता बिल्ला नहीं है जो आपने पालतू जानवर रखे हैं कहीं पे. You need to understand how important these words are, you know, for Muslims. कि जबरदस्ती नहीं चलेगी हमारे ऊपर. हम बागैरत लोग हैं, इस्लाम हमें गैरत देता है. किसी भी मौके के ऊपर ये मत सोचें कि आप जो मर्जी करेंगे और हम मान जाएंगे. Okay, see, Palestinians are not bowing down. Why do you think everybody in the world loves the Palestinians? Because they don't bow down. They keep fighting. कि भाई जो कुछ होगा, every human being has the right to practice whatever he wants to in the limits of morality, right? Now, whatever they want to practice on their own selves, हिजाब तो उस लड़की ने खुद करना है ना. तुम्हारे बाप को क्या जाता है अगर मैं हिजाब करती हूँ? But no, वहां पर you're poking into this matter now, then you poking into Islam now. Okay? So जब तक आप इस्लाम को फर्स्ट सर मेरा प्रायोरिटी के एक ऊपर क्वेश्चन था आइडेंटिटी में डिक्लेयर कि नहीं जैसे करेंगे, कि आप पीपल आर गोना जानते हैं कि रन ओवर इंडिया यू, में भी बुलडोज यू, आवाम नो पर मैटर बहुत व्हाट यू वांट जुल्म टू हो डू. रहा है आप तो खाना और पानी भी आपका जैसा बंद कि कर देना रिसेंटली चाहिए अगर आप इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहे. And I'm a believer of that psychology. I'm not saying try and kill people. I'm saying the threat has to be there कि भाई इन लोगों से पंगा नहीं लेना. ये बंदे जब कम्युनिटी की आइडेंटिटी के ऊपर आते हैं तो पूरी दुनिया को रोन के रख देते हैं. You need to understand what Muslim is and what Islam gives us. Okay, there's a respect that we give to the you know the South African black community. And हम सारी उम्र देते रहेंगे उनको respect. We're going to keep giving that token of respect forever, right? Everybody does. Why do we respect Nelson Mandela? He never bowed down, you know. Now the technique can be argued, because I do argue that South Africa could have been freed about 15 to 20 years before it actually got free. But okay, that's an argument. But the threat was always there. He was the only man who was actually creating that psychology that, you know what, you can't just step over my face and I'm going to pretend to die. Okay?
of the people who are listening and who are going to listen to this might go through a certain psychological dissonance and might just go through the fact that, you know what, Sahil Adeem, you're actually crossing some lines here. You're actually trying to create some certain rebellion. You're going against some motifs of, global harmony. That's the identity I'm trying to challenge. If you're thinking like that, that's the identity I want to challenge. That is something that is conditioned into you. Okay, that's pure mental slavery. Every human being has the right to rebel against any kind of oppression that is unto him by anybody, regardless of whether a Muslim is being oppressed or a Muslim is the oppressor. We need to help the oppressed, whether it's a Hindu being oppressed by a Muslim. Okay, but in this case, Muslims are being oppressed. And you have to understand, that's a way bigger shame that a global community is oppressed at a local level. That's a shame to every Muslim in the world because we're all connected through a single chain. We all should have created that threat. India should have been afraid that, if we touch a Muslim, Turkey and Pakistan and Arab world and the African world is going to start to shake up. Okay, any Pakistani girl, we touch that girl, Indonesian tides are going to start to flow towards India. That's the identity that I wanted that I'm trying to preach here. But since we don't do that, we actually draw so hard lines, such thick lines between each other that, even Pakistani Muslims are starting to think that, oh, it's an Indian Muslim ka masla hai. Un tak to Islam pahuncha hi nahi. No, they don't even understand what Islam gave them. So it's a problem that we better solve at our own ends. But let me just conclude that last statement. The best part is that, आपको जब अपनी बारी आती है ना, जब हम सबको, जब मेरी बहन का हिजाब उतारने के लिए किसी और शहर से लोग या उसी शहर के लोग इकट्ठे हो रहे हो, तब मुझे वही वाली डिमांड चाहिए होती है अंदर से. That's the time when I actually want that kind of identity. मेरे अंदर की आवाजें ऊंची हो जाती हैं, मेरे हाथ पैर खुद ही चलना शुरू हो जाते हैं. I mean, such an amazing Islam that you practice for your own sister, but somebody else's sister is going through that. All of a sudden, we're like, oh, that's an Indian issue, man. That's such a, that's deep level hypocrisy that is brewed into us through, last 2-3 generations of weak and confused Muslims. Yes, sir.